Gymnosperms were abundant in the Mesozoic era, especially during the Jurassic period. Now only about 900 species are left, of which 500 species are of conifers. They are present all over the world and account for about one-third of the world's forests. Major groups seen nowadays are cycads and conifers. They maintain their dominance only in the colder region of the world where snow rather than rain is the source of water. The ovules are not enclosed in an ovary wall and remain exposed both before and after fertilization. Hence, after fertilization, the seeds that are formed are not enclosed in an ovary or fruit and remain exposed. They do not bear fruits as there is no ovary. All have well-developed xylem tracheids. All are perennials living for many years and grow to form woody trees or bushy shrubs. None are herbs or annuals. Class 1 of the gymnosperms, the giant redwood tree, is known to be one of the tallest tree species. Gymnosperms generally have tap roots. Roots of some genera have fungal associations. Roots of Pinus have symbiotic association with fungi called mycorrhiza. Roots of cycas have small specialized roots called corylloid roots, which are associated with nitrogen-fixing cyanobacteria. The stem may be unbranched as in cycas or branched as in Pinus or Cedrus etc. जिम्नोस्पर्म्स वो प्लांट्स होते हैं जिसमें ओव्यूल्स ओवरी वॉल से घिरे नहीं होते हैं। इसमें फर्टिलाइजेशन से पहले तथा बाद में ओव्यूल्स एक्सपोज्ड रहते हैं। सीड्स जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में डेवलप होते हैं वो कवर्ड नहीं होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स में मीडियम साइज या टॉल ट्रीज व श्रब्स झाड़ियां आते हैं। सेक्वोया जायंट रेडवुड ट्री जिम्नोस्पर्म्स की टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज में से एक है। इनमें जनरली टैप रूट पाई जाती है। कुछ जेनेरा में रूट्स फंगल एसोसिएशन करके माइकोराइजा बनाती है जैसे पाइनस में, जबकि कुछ दूसरों जैसे साइकास में स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स कोरलॉइड रूट्स नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया से एसोसिएटेड होती है। साइकास में अनब्रांच्ड स्टेम होता है तथा पाइनस और सीड्रस में the leaves may be simple or compound. Cycas has pinnate leaves that persist for a few years. The leaves in gymnosperms are well adapted to withstand extremes of temperature, humidity and wind. Conifers like Pinus have needle-like leaves that reduce the surface area, which reduces transpiration. They also have thick cuticle and sunken stomata to reduce the water loss. The plant is heterosporous, means gives rise to two types of spores, microspores and megaspores. Generally, cones bear the sporophylls, which bear sporangia in which spores develop. इनमें लीव्स सिंपल या कंपाउंड होती हैं। साइकास में पिन्नेट लीव्स कुछ वर्षों तक रहती हैं। इनकी लीव्स अत्यधिक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और वाइंड को सहने के लिए अनुकूलित होती है। कॉनिफर्स में लीव्स नीडलाइक होती है जो सरफेस एरिया कम करती है। लीव्स के थिक क्यूटिकल और संकिन स्टमटा वाटर लॉस को रिड्यूस करते हैं। जिम्नोस्पर्म्स हेटेरोस्पोरस होते हैं और ये हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स उत्पन्न करते हैं। ये स्पोर्स स्पोरांजिया में प्रोड्यूस होते हैं। स्पोरांजिया स्पोरोफिल्स में इगे होते हैं। The strobili-bearing microsporophylls and microsporangia are called microsporangiate or male strobili. The microspores develop into a male gametophytic generation which is highly reduced and is confined to only a limited number of cells. This reduced gametophyte is called a pollen grain. The development of pollen grains take place within the microsporangia. The cones bearing megasporophylls with ovules or megasporangia are called macrosporangiate or female strobili.
The male or female cones or strobili may be born on the same tree, Pinus. However, in cycas, male cones and megasporophylls are born on different trees. The megaspore mother cell is differentiated from one of the cells of the nucellus. The nucellus is protected by envelopes and the composite structure is called an ovule. The ovules are born on megasporophylls, which may be clustered to form the female cones. The megaspore mother cell divides meiotically to form 4 megaspores. 1. Of the megaspores enclosed within the megasporangium develops into a multicellular female gametophyte that bears 2 or more archegonia or female sex organs. The multicellular female gametophyte is also retained within megasporangium. स्पोरोफिल्स एक एक्सिस के अलोंग स्पाइरली अरेंज होकर लैक्स या कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिली या कोन्स बनाते हैं। वह स्ट्रोबिली जिस पर माइक्रोस्पोरोफिल्स और माइक्रोस्पोरेंजिया लगे होते हैं, उसे मेल स्ट्रोबिली माइक्रोस्पोरेंजिएट कहते हैं। माइक्रोस्पोर्स डेवलप होकर मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन का निर्माण करते हैं। ये हाईली रिड्यूस्ड होती है और यह कुछ ही सेल में सीमित कन्फाइंड रहती है। इस रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट को पोलन ग्रेन कहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पोलन ग्रेन्स का निर्माण होता है। वह कोन जिस पर मेगास्पोरोफिल्स और मेगास्पोरेंजिया लगे होते हैं, उसे फीमेल स्ट्रोबिली मैक्रोस्पोरेंजिएट कहते हैं। पाइनस में मेल कोन्स और फीमेल कोन्स एक ही ट्री पर लगे होते हैं। साइकास में मेल कोन्स और फीमेल कोन्स अलग अलग ट्रीज पर लगे होते हैं। मेगास्पोर मदर सेल न्यूसेलस की एक सेल से डिफरेंशिएट होता है। न्यूसेलस एक एनवलोप द्वारा घिरी होती है। इस पूरी संरचना को ओव्यूल कहते हैं। ओव्यूल्स मेगास्पोरोफिल्स पर उत्पन्न होते हैं। ये ममलकर फीमेल कोन्स बनाते हैं। मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है, जिससे 4 मेगास्पोर्स बनते हैं। मेगास्पोरेंजियम न्यूसेलस में जथित एक मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट मल्टीसेल्यूलर में डेवलप हो जाता है। फीमेल गैमेटोफाइट में 2 या 2 से अधिक आर्किगोनिया होते हैं। In gymnosperms, the male and the female gametophytes do not have an independent free-living existence. They remain within the sporangia retained on the sporophytes. The pollen grain is released from the microsporangium. They are carried in air currents and come in contact with the opening of the ovules borne on megasporophylls. The pollen tube carrying the male gametes grows towards archegonia in the ovules and discharge their contents near the mouth of the archegonia. Following fertilization, zygote develops into an embryo and the ovules into seeds. These seeds are not covered. ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के विपरीत जिम्नोस्पर्म के मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स फ्री लिविंग नहीं होते हैं। ये स्पोरोफाइट पस्परंजिया के अंदर रहते हैं। इनमें पोलन ग्रेन्स मेगास्पोरेंजियम से रिलीज होते हैं। ये वायु द्वारा ओव्यूल्स की ओपनिंग के संपर्क में आते हैं। पोलन ग्रेन्स से निकलने वाली पोलन ट्यूब्स मेल गैमीट्स को आर्किगोनिया तक ले जाती है। पोलन ट्यूब अपना कंटेंट आर्किगोनिया के माउथ के पास छोड़ देती है। वहां मेल गैमीट का एग से फर्टिलाइजेशन होता है तथा जाइगोट बनता है। जाइगोट विकसित होकर एम्ब्रियो में तथा ओव्यूल्स विकसित होकर सीड्स में बदल जाते हैं। ये सीड्स कवर्ड नहीं होते हैं, अर्थात नेकेड होते हैं। Reasons for the success of gymnosperms: the development of secondary growth in the vascular tissue led to the growth of root and stem in diameter and hence enabled the plant to form extensive network of root system under the soil and shoot system above the ground.
The evolution of dry, wind-blown pollen grain that does not require water can travel for miles and withstand severe drying as well. The most important was the evolution of the seed. A typical seed is an embryo plant which is surrounded by an endosperm and is covered in protective seed coats. It has all the food necessary for the young plant. A seed has number of advantages. A seed is a fertilized ovule which is well protected by many layers of cells. The food stored around the seed can be used by the developing zygote at the time of germination. A seed can remain dormant till the conditions are suitable. Seed is modified in many ways to bring about the dispersal. Formation of the seed. All gymnosperms produce two types of spores, microspores and megaspores, and hence termed as heterosporous. Spores are produced by sporangia formed on special leaf-like structures called sporophylls. Sporophylls are arranged spirally along an axis to form compact structures called strobili or cones. The strobili or cones bearing microsporophylls and microsporangia are called male strobili or male cones. The strobili or cones bearing megasporophylls and megasporangia are called female strobili or female cones. The male and female strobili or cones could be present on the same tree as in Pinus or on different trees as in Cycas. The pollen grains are carried by wind in gymnosperms. On reaching stigma, the pollen grain germinates into a pollen tube carrying male gametes. It passes through a pore called micropyle and fertilizes the egg cell. The water is not required at any stage. The fertilization leads to the formation of a zygote which develops within the ovule. A seed is a fertilized ovule. The ovule wall forms the seed coat. During the development, nutrition is taken from the parent plant, i.e., the sporophyte, to which it is still attached. On maturity, the seed is shed. It remains inactive or dormant till it gets suitable conditions for germination. On germination, it gives rise to a seedling which gets nourishment from stored food of the seed.